Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So today's video is again related to skincare, and in today's video I'll be sharing my comparison between these two products. These two are peeling gel. So this one is from Wishful. This is Huda's brand. This is their Yo Glow Enzyme Scrub. And I'll be comparing Wishful with this product from Innisfree. It's their Green Barley Gomage Peeling Mask. So I'll talk about what peeling gel exactly is and what it does to your skin, and I'll give you a comparison between these two and I'll tell you which is better. So if you're interested, please keep on watching this video. First, let's talk about what peeling gel actually is. So peeling gel is kind of a gentle exfoliator for your skin. It's a combination of physical exfoliator and chemical exfoliator. So physical exfoliators which will be present in peeling gel are not similar to those big chunky scrubbing particles what you find in general scrub, जो apricot के or walnut particles or different kind of particles what we get in normal scrubs. Those particles can be harsh for your skin, but the physical exfoliator which is present in peeling gel is not at all harsh for your skin. It's very gentle. And the chemical exfoliators which are generally found in these kind of peeling gels are AHAs and BHAs. Now what it does to your skin, so similar to other physical and chemical exfoliators, it exfoliates your skin but in a gentle way. It also helps in evening out your skin tone. So the AHAs present in this kind of peeling gel works on the top layer of your skin, so that will help in removing the dead skin what you have on your skin. It will help in evening out the skin tone. It will brighten your skin, it will provide glow to your skin, and it will help in retexturizing your skin. And BHA also works in the similar way, but BHA works on the deepest layer of your skin, and it can help with acne marks and generally acne. So that's how this peeling gel works. Now let's talk about these two products what I have with me. Both of these are peeling gel. So this one is Wishful Yo Glow Enzyme Scrub. In case you don't know, Wishful is a skincare brand by Huda. Huda का makeup का भी brand है Huda Beauty. So she has this skincare range as well which goes by the name Wishful. Now the name of this product is actually Yo Glow Enzyme Scrub. Actually this is not a scrub. The name scrub gives you wrong impression. This is not a scrub, it's a peeling gel. And the next product is this one from Innisfree. It's their Green Barley Gomage Peeling Mask. Now the name of this product is again wrong. It's not a peeling mask. It's not something what you apply on your skin and just leave it for some time and then wash it. It doesn't work that way. So it's not a mask. It's again a peeling gel. So the packaging of both these products is very similar. Both comes in this squeezy tube packaging. Just the way you need to take out the product is a little less, like the way you need to open it. So this one comes with this screw top. तो आपको इस तरह से ओपन करना पड़ता है. This one has this kind of cap, so you have to open it like this and you can take out the product. So that is the difference between the packaging of these two, but दोनों ही squeezy tube packaging में आते हैं. Now let's talk about how you use these products. So you need to use these products on your dry skin. So once you are done with removing your makeup, if you are wearing any makeup, and you're done with cleansing your face, just dry your face, pat dry your face with some towel or something, and then only use these peeling gels. So what you need to do, just take a small amount of these peeling gels and then apply on your face and just rub it, gently rub it. So what it will do, it has some kind of physical exfoliator in it which will react with the dirt and oil on your skin, and once you rub it, it will it will generate those cellulose white balls. So actually both of these products contain cellulose as physical exfoliator. So it's a very gentle physical exfoliator. तो इन दोनों ही प्रोडक्ट में cellulose है. तो जब आप अपने फेस को रब करते हैं, when you rub this product on your face, so that cellulose reacts with the dirt or oil or whatever gunk is present on your face, and it generates those white balls. So जनरली पीपल थिंक कि दैट इज़ डेड स्किन. सो ऐसे रब करने से आपकी डेड स्किन कभी रिमूव नहीं होती है. सो दैट्स अ मिथ. It doesn't that white balls what you see on your face when you use these kind of products is not actually dead skin. It's just the cellulose which reacts with the oil and dirt on your face and creates those
white balls what you see. If we talk about the ingredients, as I told you, the physical exfoliator which is present in both these products is cellulose. So physical exfoliator दोनों में same है. So apart from that, in Wishful there are pineapple and papaya extracts present. So pineapple extracts actually smooths your skin, it retexturizes your skin and it provides glow to your skin. And the papaya extract is again a gentle exfoliator which is present in the Wishful, and it helps in reducing the appearance of dark spots on your skin, and it also provides a soothing effect to the skin. Apart from those two extracts, there are multiple other food extracts also available in this YoGlow. And in Gourmet peeling mask, the extract which is present is green barley extract, which actually exfoliates your skin very gently without leaving it dry. तो इसके अलावा इसके अंदर और कोई फ्रूट एक्सट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है. मैंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जब चेक करी, आई कुडंट फाइंड एनी अदर फ्रूट एक्सट्रैक्ट इन Innisfree one. It has only green barley extract. Now but the chemical exfoliators present in these two masks, दोनों की ही अंदर AHA and BHA दोनों present हैं, but the AHA which are present in this Wishful are glycolic acid, lactic acid, malic acid. So ये सारे AHAs present है इसके अंदर, but in this one there is only glycolic acid. Now if we talk about the BHA, दोनों ही product के अंदर salicylic acid present है which is a BHA. तो जो AHA रहता है वो आपकी टॉप लेयर पे काम करता है. तो इट रिमूव्स द डेड स्किन ऑन योर फेस, आपके स्किन को रीटेक्सचराइज करने में हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स इन ब्राइटनिंग अप योर फेस एंड प्रोवाइडिंग अ ग्लो. एंड BHA वर्क ऑन डीपेस्ट लेयर ऑफ योर स्किन. तो आपके पोर्स को डीप क्लीन करता है BHA, एंड इट रिमूव्स एनी काइंड ऑफ गंक और डर्ट प्रेजेंट डीपली इन योर पोर्स. तो पोर्स को क्लीन करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, and ultimately it helps with blackheads, acne and all those things. So apart from those good ingredients, there are some questionable ingredients also present in these two. तो दोनों की ही अंदर alcohol present है. Actually alcohol is sometimes good as well for your skincare products. तो दोनों की ही अंदर alcohol present है, दोनों की ही अंदर fragrance है. Although fragrance जो है वो थोड़ा bottom पे मेंशन किया हुआ है इंग्रेडिएंट लिस्ट में, बट दोनों की ही अंदर फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है. नाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी सिमिलर. बोथ हैव दिस क्रीमी मिल्की कंसिस्टेंसी, एंड दोनों की ही अंदर थोड़ी सी ग्रिटीनेस है. तो इट्स नॉट लाइक इट्स टोटली क्रीम. थोड़े सा आपको व्हेन यू फील इट, यू विल फील लिटिल बिट ऑफ ग्रिटीनेस in the product, but that is not very harsh for your skin. Like normal जो scrub रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा gritty रहते हैं because of those particles which are present in those scrub. but ये gritty है, but उतने भी ज़्यादा gritty नहीं है कि ये आपके स्किन के लिए हार्श होंगे. इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन बट इन अ जेंटल वे. तो वो जो ग्रिटीनेस है वो इसके अंदर है, बट बहुत ही कम ग्रिटीनेस आपको मिलेगी. सो दिस ग्रिटीनेस विच इज प्रेजेंट इन बोथ दीज प्रोडक्ट्स, इफ वी कंपेयर, दिस विशफुल वन इज लेस ग्रिटी देन दिस वन. I told you when you apply these products on your face, the cellulose present in these products will react with the oil and dirt on your skin and creates those white balls. तो जब मैंने इनको यूज़ किया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो वाइट बॉल्स जनरेट होती है ना, वो इस Innisfree वाले में क्विकली जनरेट होती हैं. दोनों के अंदर काफ़ी जल्दी जनरेट होती हैं, बट इफ़ वी कंपेयर द वाइट बॉल्स जनरेशन इज़ क्विकर विद दिस Innisfree वन देन द विशफुल वन. एक्चुअली दोनों का ही जल्दी, मतलब दोनों के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट है वो जल्दी ही रिएक्ट करता है, बट स्टिल अगर कंपेयर करना हो हमें तो Innisfree वाला और ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है इन कंपैरिजन टू विशफुल वन. नाउ अबाउट द प्राइस एंड द अमाउंट you get in these products. So the Innisfree one retails for 900 rupees and you get 120 ml of product in this one. There are no variants available in this one. There is only one variant which is 120 ml variant, while Wishful comes in two different variants. It has one variant of 40 ml which I have with me, and other one is 100 ml. तो जो 100 ml वाला है that retails for $39, and if we convert that price in Indian rupees, तो that will come around 2,900 something, मतलब around 3,000 rupees. But that I'm calculating directly with dollar to Indian price. But आपको उतने का ये actually मिलेगा नहीं, because you'll have to buy it using some
Instagram store, by some Instagram store or something. The Instagram stores generally sell it for more than 4,000 rupees, and the price of this 40 ml one is $20 actually, which comes around 1600 rupees or something. But the price what I paid for this one is 2000 plus. तो आपको again ये Instagram store से purchase करना पड़ेगा, तो actual price what you have to pay will be even more. So that is the price difference. So price की अगर बात करें तो दिस इज़ मच मोर चीपर देन दिस वन. ये 40 ml वाले ही आपको इससे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, बिकॉज ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और एनीवेज की प्राइस काफ़ी ज़्यादा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. और अवेलेबिलिटी की बात करें तो दिस इज़ ईजिली अवेलेबल एंड दिस वन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल बिकॉज यू हैव टू बाई इट थ्रू सम इंस्टाग्राम स्टोर ओनली. और इस वाले के ऊपर आपको और भी ऑफर भी मिल सकते हैं, एंड यू कैन ईजिली गेट इट फॉर इवन लेसर प्राइस. तो प्राइस वाइज this is no doubt a better option than Wishful one. Now if I talk about how these two works, actually these two works in a very similar way. So both of these products remove any kind of oil or dirt present on the skin really well. The face will feel very clean and soft when you use both of these products. और जो अगर आपके फेस पे कुछ टेक्सचर हो रखा होगा तो ये उसको भी काफ़ी स्मूथ कर देता है, मतलब जो फेस है वो काफ़ी स्मूथ फील होता है, एंड इट गिव्स सम काइंड ऑफ मैटिफाइंग इफेक्ट एज वेल टू द फेस. बट एक प्रॉब्लम ये है कि फेस काफ़ी ड्राई फील होता है, बिकॉज ये जो भी ऑयल रहता है ना फेस पे उसको टोटली रिमूव कर देता है. तो फेस काफ़ी ड्राई फील होता है. दोनों के ही साथ मैंने ड्राइनेस फील करी है, एंड दोनों ही इक्वली ड्राई करते हैं फेस को, बट काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देते हैं. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्लो दे एक्चुअली प्रोवाइड ग्लो एंड ब्राइटन्स the skin, but that glow or that brightening effect is not long lasting. It will last for maybe half an hour or something, or maybe 1 hour something, not more than that. So basically both of these works in a very similar way. दोनों ही सेम तरीके से आपके फेस को क्लीन करेंगे, दोनों ही ड्राई करते हैं फेस को, एंड दोनों ही इक्वल अमाउंट का ग्लो भी देते हैं फेस पे. तो इफेक्ट वाइज इफ आई कंपेयर दीज प्रोडक्ट्स, बोथ वर्क इन अ वेरी सिमिलर वे. Now if I summarize this video, packaging wise both of these products are same. दोनों ही squeezy tube packaging में आते हैं, so it's very easy to use and it's very convenient. Now if I talk about the ingredients present in these two products are again very similar. दोनों के ही अंदर cellulose present है as a physical exfoliator. इस वाले के अंदर pineapple and papaya extracts हैं, while in this one you get green barley extracts. दोनों के ही अंदर EHA, BHA present है. BHA which you find in these products are same, salicylic acid, but the AHA present in this one are more than this one. इसके अंदर केवल glycolic acid present है, while in this one you have glycolic acid, lactic acid and malic acid. नाउ हाउ दे वर्क्स, तो दोनों ही बहुत ही सिमिलर तरीके से काम करते हैं. दोनों ही आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं, एंड दोनों ही हार्श नहीं है फेस पे. जो ग्रिटीनेस है वो इस वाले के अंदर इससे कम है, बट इतना भी खास डिफरेंस नहीं है, एंड दोनों के अंदर फ्रेगरेंस है, अल्कोहल है. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, बट द प्राइस पॉइंट, इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइस पॉइंट, दिस इज़ much cheaper, actually a lot cheaper than this one, and this is very easily available in India, while this is not at all easily available, and that's why you need to pay a lot more for Wishful. So I can say कि if you are looking for a dupe for Wishful, you got that, which is this Innisfree Gourmet Peeling Mask. आई फील कि ये इसका परफेक्ट ड्यूप है, बिकॉज इंग्रेडिएंट सेम है, सेम तरीके से काम करता है एंड ऑल. तो आई थिंक कि ये परफेक्ट ड्यूप है विशफुल का फॉर अ वेरी लेस प्राइस, अ लॉट लेस प्राइस. So if you are thinking of adding peeling gel in your skincare routine, and if you are thinking whether to go for Wishful or not, I think you can totally skip it. Instead you can buy this Innisfree Gourmet Peeling Mask, because it works very similarly to this one. Guys, that's all for today's video. I tried my best to explain you what actually peeling gel is, and I tried to explain कि दोनों ही प्रोडक्ट में किस तरह के इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, और वो इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं आपकी स्किन के लिए. एंड मैंने काफ़ी अच्छा कंपैरिजन देने की कोशिश करी आपको, मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, and don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Please let me know in the comment box if you are planning to buy Wishful and this video actually changed your mind. I'll be very happy to know that. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.